First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. In this lecture second, we shall discuss the forces acting on a rigid body. See this, forces acting on a rigid body, and in that forces acting on a rigid body we shall discuss the sum of vector moments of forces. In this lecture we shall discuss the sum of vector moments of a system of forces. Actually, in the previous lecture we have seen that if force acting on a rigid body, suppose this is a rigid body. In the previous first unit we have studied force acting on a particle, but in this section we shall study the force acting on a rigid body. Suppose this is a rigid body, if force is acting on that rigid body, then there will be two possible displacement of that rigid body. So first type of a displacement may be motion of a translation, and second type of a displacement is called as a motion of a rotation, which is depend on the force of that body. See this, what is meant by motion of a translation we have seen. In the last lecture we have seen this in deep. So motion of a translation means a particle which displaces from one point to the another point. Then this type of a motion is called as a motion of a translation. And generally in the motion of a translation, each particle of the rigid body displaces, all the particles of the rigid body displaces the same direction. So that type of a motion is called as a motion of a translation. Similarly, we have seen that the second part of a motion is a motion of a rotation. A rotation is a characterized, is a circular movement of an object around a center. It is also called as a rotation. If the axis passes through the body's center of a mass, the body is said to rotate upon itself or spin. See this, if this body rotates about this vertical axis, then the direction of rotation of each particle is along the different direction. हा पार्टिकल या दिशेत जातो, हा पार्टिकल या दिशेत येतो, तो दुसरा पार्टिकल त्या दिशेत जातो. म्हणजे वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये पार्टिकल कसे होत जातात, डिस्प्लेस होत जातात. मोशन ऑफ रोटेशन मध्ये सी दिस, in this motion of rotation consider this particle. Suppose this particle displaces, this particle is displaces in this direction. Suppose this particle is displaces in this direction, this particle displacing in this direction, this particle displaces in this direction. Means the motion of the particle, that is the direction of the motion of a particle, is continuously changes. So this type of a motion is called as a motion of the rotation. See this, motion of a rotation and motion of a translation, both are. This is the rotation motion, this is a translation motion. If suppose your bus, bus is a traveling, then you observe that the total body of a bus displaces in the translation motion, but the wheels of that bus exerts two types of a motion, that is a translation motion and rotational motion. Or you can check your vehicle also. Suppose you are traveling along the vehicle, then total body of a vehicle or yourself also traveling in the translation motion, but your vehicle of the that is the wheels of that vehicle are traveling in rotational motion and translation motion. This is the two types of a motion which are exerted on this body. Okay, now see this. Next, see this, write down these key points here. Yesterday we have seen that there is one important theorem which we have seen yesterday. What is that important theorem? The moment of a force is a measure of its tendency
to cause a body to rotate about a point of axis. Moment of a force, our aim is to find out the moment of a force. Second, the magnitude of a moment of force acting upon about a point or axis is directly proportional to the distance of the force from the point of axis. We have seen this. हे आपण काल पाहिलेले थेरम मध्ये या कन्सेप्ट ऑलरेडी वी हैव सीन. ये दोनों भी कन्सेप्ट ऑलरेडी वी हैव सीन इन द थेरम. नाउ also we have proved this theorem. Third, you can write this as a note number, key point number 3. What is that key point number 3? We have proved the theorem. Vector moment about an axis due to the force F bar, which is given by capital M bar is equals to R bar cross F bar, where R bar is the direction vector towards the point of application of force from the axis of a rotation. See this. So OP bar means, see this diagram, OP bar is equals to R bar. The perpendicular distance from a point O to the line of action of the force is considered as a small p. See this, small p. And the axis of a rotation is, suppose R bar cross F bar. Its unit vector is denoted by E cap. That's a unit vector जे आपण दाखवलेला आहे ते कुठलं E cap आहे. See this. So this is the first point. Next, the next key points which are depend on the theorem. What are those? Moment of a force capital M is equals to, see there, the moment of force capital F is equals to capital M is equals to force into perpendicular distance, that is F into small p. Second, the moment of a force which is equals to the magnitude of cross product of R bar cross F bar. अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स इस सेकंड फार्मूला के आधार पे निकाल सकते हो. दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार क्रॉस एफ बार. सिमिलरली हियर द वेक्टर मोमेंट ऑफ, नाउ दिस इज अ मैग्नीट्यूड मोमेंट, दिस इज अ वेक्टर मोमेंट. मैग्नीट्यूड मोमेंट मीन्स वी हैव टू राइट दिस फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ अ मॉड्यूलस. And vector moment means the vector moment of force capital M bar is equals to R bar cross F bar. If capital M is equals to 0, this implies that capital F into small p is equals to 0. This implies that F is equals to 0 or p is equals to 0. Conversely, if small p is equals to 0, then moment is also 0. And next, the vector moment capital M bar remains the same for the point P of application of the force at any point which is in the direction of the action of the force. Okay, now here next we shall solve this important theorem. Actually यहाँ पे हमें ये बहुत important theorem discuss करना है. What is that theorem statement of the theorems here? The sum of a vector moments of a system of forces acting on a particle about any point is equals to the vector moment of their resultant about the same point. See this. Yesterday we have calculated the vector moment due to the single force F bar about a point O. But today in this theorem we have to calculate the vector moment due to the n number of forces, means the system of forces. इसका मतलब क्या होता है? System of forces means if n number of forces are acting on a rigid body, due to this n number of forces we have to calculate the resultant vector moment, and which we have to prove this. The sum of the vector moments of a system of forces acting on a particle about any point is equals to the vector moment of their resultant about the same point. यानी कि इसका मतलब क्या होता है?
अगर आप अलग अलग फोर्सेस से वेक्टर मोमेंट निकाल सकते हो, F1 F2 सपोज, देन अलग फोर्सेस से वेक्टर मोमेंट निकालने के बाद इसकी आने वाली वैल्यू एंड उसके रिजल्टेंट की वेक्टर मोमेंट की आने वाली वैल्यू बोथ आर द सेम. इसका मतलब क्या होता है? बोथ आर द सेम. ओके, नाउ लेट अस प्रूफ. स्टार्ट विद प्रूफ. ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. यहाँ पे जो भी गिवन कंडीशन है उसी आधार पे एक डायग्राम निकालना. Suppose this is a rigid body. If n number of forces acting on a rigid body at a point, suppose this is a F1, one minute. Suppose the n number of forces acting on a rigid body are, suppose this is a F1 bar, then another force which is acting at a point that is considered as F2 bar. This is F1 bar. Next, the third force which is considered as F3 bar. Suppose this is F3 bar. And if we consider the resultant of all these forces dot 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 in this way, Fn bar, then we consider the resultant of these forces is suppose R bar. R bar is the resultant of these forces. Okay. This is F1, F2, F3. Then we have to find out the moment about a point O due to the force F bar. This is a suppose OP bar is equals to R bar. Then this moment of a force we can write as, this is a rotation, axis of a rotation, that is R bar cross, suppose F1 bar, F2 bar, whatever may be, we can write this F1 bar, F2 bar, F3 bar, dot 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 Fn bar. Suppose we have considered the n forces are acting on a rigid body. Let theta be the angle made by this vector R bar. Then there is not necessary to write here. If the n forces are acting on a rigid body at a point P, then our aim is to find out the vector moment due to the resultant. यहाँ पे हमें क्या calculate करना है? Vector moment due to the resultant calculate करना है. So how to calculate this here? Now we shall discuss this. Write down. First of all, I express the theoretical part of this theorem. Consider the forces F1 bar, F2 bar, F3 bar, dot 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 Fn bar be the n number of forces which are acting on a rigid body at a point P. Let R bar be the resultant of this forces F1 bar, F2 bar, F3 bar. The vector moment due to the force F1 bar, F2 bar, F3 bar about a point O, this is our M, and which we have to prove that vector moment is capital M, is the sum of all vector moments. So we shall write this theory. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं. You can ask any question in the chat box. I shall explain your answer of your question. Okay, now see this proof. Let F1 bar plus F2 bar plus F3 bar plus dot 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 plus Fn bar be the n number of forces acting on a rigid body at a point, suppose P.
Okay, this is the first statement. N number of forces acting on a rigid body at a point P. We have to calculate the vector moment due to the forces about a point O. About a point O. This is the second statement. See this. You have to write clearly one statement separately. Now let us start. Suppose we have to take the resultant of these forces. Let, now third statement, let capital R bar be the resultant of the forces F1 bar, F2 bar, F3 bar dot, okay, Fn bar. Therefore, we can write, therefore, we have, if R bar is a resultant means the summation. So, we can write as R bar is equals to F1 bar plus F2 bar plus F3 bar plus dot plus Fn bar. Suppose if we consider this equation 1, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स आर बार. वी हैव कंसिडर, हमने ये कंसिडर किया है आर बार इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल थ्री फोर्सेस. रिजल्टेंट इसका मतलब ये जो आर बार है ये सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है. इसकी एक डायरेक्शन होती है. एक्चुअली आर बार इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस. सो वी कैन टेक आर बार इज इक्वल्स टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार डॉट Fn बार. ऍक्च्युअली तुम्हाला इथं आर बार दाखवायची सुद्धा गरज नाही आहे. डायग्राम मध्ये तुम्ही आर बार दाखवण्याच्या ऐवजी Fn जरी दाखवला तरी चालतंय. सर्वांचा रिझल्टंट आपण डॉट न दाखवा म्हणजे तो आर बार असेल, लक्षात घ्या. नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट द वेक्टर मोमेंट ड्यू टू द फोर्सेस F1 bar, F2 bar, CSIR. Now CSIR, suppose that the direction vector from O to P, suppose that OP bar is equals to R bar, where O is any point at which we have to calculate the vector moment about the point means O. Okay, here OP bar is equals to R bar. Therefore the vector moment due to the forces F1 bar, F2 bar, F3 bar dot Fn bar about a point O is given by, see this, yesterday we have seen that vector moment due to the force F bar about a point O. यहाँ पे हमने कल जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव किया है उसमें we have studied the vector moment due to the force, single force F bar about O, which is given by m bar is equals to R bar cross F bar. Similarly, we have to use that formula. Vector moment due to the force F1 is given by m1 bar is equals to R bar cross F bar. इसका मतलब क्या होता है? Vector moment due to the first force F1 bar. Similarly, m2 bar is equals to R bar cross F2 bar. Dot. In this way, vector moment due to the nth number of force, nth force,
that is denoted by r bar क्रॉस fn बार। ये हमने कल जो हमने थ्योरम प्रूव किया उसी थ्योरम के आधार पे वेक्टर मोमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग फोर्स के आधार पे हमने वेक्टर मोमेंट कैलकुलेट किया। फर्स्ट फोर्स का वेक्टर मोमेंट वी हैव कंसीडर्ड एज m1 बार, सेकंड फोर्स का वेक्टर मोमेंट हमने m2 बार कंसीडर किया है, थर्ड फोर्स का वेक्टर मोमेंट हमने mn बार m3 बार कंसीडर किया। इसी तरह से यह वेक्टर मोमेंट ड्यू टू द n नंबर ऑफ nth फोर्स इज इक्वल्स टू कंसीडर एज r बार इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस fn बार CR। Now here is a most important thing, that the resultant vector moment means sum of all the forces. Okay, therefore the resultant vector moment, therefore the resultant vector moment is given by, suppose we consider resultant as a capital M bar is equals to m1 bar plus m2 bar plus m3 bar plus dot 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 plus mn bar। ये सभी का एडिशन करो वेक्टर मोमेंट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन दिस वे वी कैन ऐड दिस, देन वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर मोमेंट। नाउ पुट द वैल्यू, सपोज m1 बार मीन्स वी कैन राइट r बार क्रॉस f1 बार। यहाँ पे सीरीज हर एक वेक्टर का जो r बार है फर्स्ट वेक्टर मोमेंट वी हैव कंसीडर r बार ओनली, r1 नहीं कंसीडर केला। m2 consider r bar. Why we can take this r bar? See here in this diagram all the forces are acting at a point P, therefore OP bar is equals to r bar is a single vector, so there is not necessary to write r1 bar r2 bar, we can't write। यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि all these forces are acting at a point P here series। Now suppose we can write this r1 bar cross f bar plus r bar cross f2 bar plus r bar cross f3 bar plus dot 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 plus r bar cross fn bar। Okay, now series we can write this as a, that is r bar cross f1 bar plus r bar cross f2 bar plus r bar cross f3 bar plus dot 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 plus। अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन है इसके आगे की स्टेप क्या हो सकती है आप बताइए मुझे। यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकालना है? जो भी बच्चे ऑनलाइन है, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, यहाँ पे मुझे आंसर देना ही पड़ेगा आपको। यू हैव टू राइट दिस आंसर। ओके, जिसका आंसर आएगा वही इस लेक्चर में उसी के अटेंडेंस हम कंसिडर करेंगे, तो सभी को आंसर देना ही पड़ता है। सो आर बार, नाउ वी कैन राइट एज आर बार क्रॉस fn बार। ओके, वेरी गुड। अभी तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। अरे जॉन के बच्चे आप नाम लिखो वहां पे। हाँ, प्रतीक्षा कलसेट्टी, पदमपल्ले, वेरी गुड। धनुरे प्रियंका, यस yes, okay, we can take r common. Only r is not a common factor here, it is essential. Here in this case we take a common r cross, r with cross, so take out a common r with cross, therefore capital M bar is equals to r bar and cross is the common factor, then remaining terms are f1 bar plus f2 bar plus f3 bar plus dot 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 plus fn bar। Okay, capital M bar is equals to r bar cross। Now we know that, now you tell me, जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट, you tell me f1 bar plus f2 bar plus f3 bar means which vector we can replace this as a summation, that is f1 bar plus f2 bar f3 bar, इसके summation के लिए हम क्या replace कर सकते हैं? See this equation number 1, see this in equation 1 we can replace as r bar is equals to this। so तो इसका मतलब क्या होता है? r bar। अभी देखो ये फार्मूला, नया फार्मूला हमने
डेवलप कर दिया है. The resultant, that is a vector moment, resultant vector moment is equals to the vector moment due to the resultant series. This proves that what we have to conclude this statement? We have concluded this statement as like a theorem series. The sum of a vector moment of a system of forces acting on a particle about a point is equal to the vector moment of their resultant. This proves that the sum of a vector moment about a point is equal to the vector moment of the resultant. And hence proved. ओके, समझ में आया करे थ्योरम? देखो यहाँ पे हमने बहुत इजी थ्योरम है. सपोज कंसिडर रिजिड बॉडी, इफ n number of forces acting on a rigid body at a point P, OP bar is equals to R bar. We have to find out the vector sum of a vector moment about a point O, which is equals to the vector moment due to the resultant. So suppose F1 bar, F2 bar, F3 bar, dot dot dot, Fn bar be the n number of forces acting on a rigid body. Let capital R bar be the resultant of these vectors. So R bar is equals to this. Then calculate separate vector moment. ज्याप्रमाणे आपण काल थेरम प्रूव्ह केला त्याचा वापर करून प्रत्येक वेक्टर मोमेंटचा रिझल्टंट कॅल्क्युलेट करा. आश्रिया गोरटे इतर रेग्युलर राहायचा, व्हिडिओ उगा प्रेझेंट टाकून बाजूला जायचं नाही. प्रीती भोसले, साक्षी कदम, प्रवीण पाटील. ओके, तो M1 बार प्लस M2 बार प्लस MN बार. जाधव आहे का? जाधवची ॲब्सेंट घ्या. तिने फक्त प्रेझेंट टाकूनच चालली जायला लागली आहे. See this, who is that Jadhav? 1 minute. प्रियंका जाधव आहे का? प्रियंका जाधव, ठीक आहे. प्रियंका जाधवचं नाव नोट करून घ्या. See this, capital M bar is equals to M1 bar plus M2 bar. This way we can take this as in this way. So this is the complete theorem. Now we shall discuss the problem based on this theorem. Now solve the problems. अभी यहाँ पे हमें problems solve करना है. Problems एक problem यहाँ पे हम solve करेंगे. See here. Find the vector moment of a force F bar. Question write down. Find a vector moment of a force F bar which is equals to I plus 2j plus 3k. Suppose this is I plus j plus k. Means I, j, k are the actually unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then our aim is to find out the vector moment. Find the vector moment of a force F bar I plus 2j plus 3k acting at a point -1, 2, 3 about the origin. Okay, see this is very important problem. Actually we have to find out the vector moment due to the force F bar which is given by I cap plus 2j cap plus 3k cap. This force is acting at a point -1, 2, 3. Then find
the vector moment about the origin. See this, as per given condition we shall discuss or we shall draw the diagram. Suppose this is a rigid body, here is a point O means the origin, the force is acting at this point. Suppose this point is P, which is given by -1, 2, 3. This is a force F bar which is acting at a point P. Our aim is to find out the vector moment about the point O. Suppose this OP bar is considered as R bar. या OP bar ला काय consider करा? R bar. What is the formula for the vector moment? The formula for a vector moment is, see this, OP bar is equals to, that is capital M bar is equals to R bar cross F bar. अभी आपको R bar निकालना है, F bar is given है, लेकिन R bar निकालना है. Here, write down here. Here, draw this diagram. Students who are attending this live lecture, draw this diagram. A force F bar which is acting at a point P, having a coordinate -1, 2, 3, and the value of a force is given. What that is, force is, what is that force? I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k. You note that I, j, k are the unit vectors along the x-axis, y-axis, z-axis. Therefore, you must put cap with these vectors. I, j, k सोबत तुम्ही आपको कैप लगाना है. अगर हम रीड करें या ना करें यहाँ पे, लेकिन आपको I, j, k ऐसा अगर भी रीड किए तो I कैप, j कैप और k कैप होता है, वो आपको लिखना है, वो बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Given that the force F bar is equals to I plus 2j plus 3k. Point is given, suppose P, what is that point? -1, 2, 3, and we have to find out the vector moment about the point. Which point? See, there about a point O, that is O means 0, 0, 0. See this? Here we can write as this. 1 minute. See here. The force is acting at a point. The force P is acting at a point P. The moment due to the force about O. We have to calculate the moment due to the force F bar about point O is, suppose capital M bar is equals to R bar cross F bar. Suppose this is equation number 1. Now R bar means what? OP bar. See here. Here OP bar, here we can write as R bar is equals to OP bar. OP bar कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्मॉल p bar minus O bar. p bar का मतलब कन्वर्ट दिस इनटू द पोजीशन वेक्टर. पॉइंट p को हम पोजीशन वेक्टर में कैसा लिख सकते हैं? पॉइंट इज -1, 2, 3. देन इसका पोजीशन वेक्टर आता है -I प्लस 2j प्लस 3k. यहाँ पे हमें R बार कैलकुलेट करना है. सो -O बार मीन्स इसका मतलब क्या आता है? देखो 0I प्लस 0j प्लस 0k, यानी कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट O. दिस इज OP बार इज इक्वल्स टू स्मॉल p बार माइनस स्मॉल O बार. एक्चुअली यू नो दैट फार्मूला, तुम्हारा आपको पता है फार्मूला. अगर ये भी बार आपको निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके पोजीशन वेक्टर की सब्ट्रैक्शन लेते हैं. दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट बी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल b बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल a बार. इसी तरह से हमने OP बार को p बार माइनस O बार लिखा है. दैट इज इक्वल्स टू -I
plus 2j plus 3k minus 0i minus 0j minus 0k, that is equals to minus I plus 2j plus 3k. That is, we can write this is a r bar. Suppose this is r bar. अभी r bar हमें पता चला है, f bar given है, f bar is already given, r bar we have calculated, then put this value in equation 1. Therefore, the vector moment due to f bar is capital M bar is equals to r bar cross f bar. Put the value of r bar in a minus I plus 2j plus 3k क्रॉस एफ बार, इसका मतलब क्या है, देखो एफ बार मीन्स आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k. ओके, नाउ जो भी बच्चे ऑनलाइन है यहाँ पे मुझे बताइए, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, सॉल्यूशन क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सॉल्यूशन कैसा किया जाता है, क्या हाउ टू कैलकुलेट दिस क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज एम बार इज इक्वल्स टू, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, सपोज दिस इज ए बार इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b बार इज इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k. अगर ऐसे दो वेक्टर्स होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट. बट हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसका मतलब है हमें a बार क्रॉस b बार निकालना है, तो याद रखिए वो फार्मूला यूज करना होता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है. डिटरमिनेंट यानी कि i j k, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इसी तरह से ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है. इसी दिस फार्मूला, यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है दो वेक्टर का, तो हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है. तो डिटरमिनेंट में फर्स्ट i j k, then the coefficient of first vector, that is minus 1 2 3, minus 1 2 3, then coefficient of second vector 1 2 3. Okay, now how to solve, this is our problem. Now how to solve the determinant, यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है. डिटरमिनेंट आप सभी को सॉल्व करने को आना पड़ता ही है. यू मस्ट नो द प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट. आपको आप सब बच्चों को डिटरमिनेंट सॉल्यूशन करना आना ही पड़ता है. हाँ, सभी को आना ही चाहिए. अगर किसी को नहीं आता है, किसी को डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करने को आता है, तो वो स्टूडेंट जिसको वो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का आता है, उसके पास बैठ के यू कैन अंडरस्टैंड दिस द मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट. जिसको आता है उसके पास बैठो और उसी से आप समझ कर ले लो कि हाउ टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट स्टूडेंट ऑल्सो. ओके, नाउ सॉल्व दिस. सेलेक्ट दिस I into cross product of its minor means 6 minus 6. Okay, then we can write as a minus j. मिडिल की टर्म कौन सी होते हैं, माइनस j, यानी कि माइनस j minus 3 plus 3 minus 3 minus 3 and plus third term, that is k, I cap j cap k cap. Then we can write as क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि जब हम k सेलेक्ट करते हैं तो k का कॉलम और रो डिलीट कर दीजिए, जो 4 एलिमेंट्स रहते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए. दैट मीन्स minus 2 minus 2. सो दिस इज I into 0 minus j into minus 6 plus k into minus 4, that is 0i plus 6j minus 4k, that is equals to, very good, very good Sayyid Tabassum,
यहाँ पे सैयद तबस्सुम ने फर्स्ट आंसर निकाल दिया है, लेकिन 6 का साइन माइनस नहीं है, 6 का साइन प्लस आता है। स्वीट कौन है? स्वीट ने लिख दिया है, धाबेकर ने भी निकाल दिया है, वेरी गुड। नाउ दिस इज द 6i minus 4k, this is the capital M bar, this is the required vector moment. This is the required vector moment. Okay, now see this, this is the process, total ही प्रोसेस आहे. या प्रोसेसच्या सहाय्याने फोर्स दिलेला आहे, ज्या ठिकाणी पॉइंट अप्लाय केला तो पॉइंट दिलेला आहे आणि अबाउट पॉइंट ओ कॅल्क्युलेट करायचे आहे. ओ म्हणजे ओरिजिन आहे. थेरम नुसार आपण कॅल्क्युलेट केलं वेक्टर मोमेंट ड्यू टू द फोर्स एफ बार अबाउट ओ दॅट इज गिवन बाय कॅपिटल एम बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. हा थेरम आपण प्रूव्ह केलेला आहे. त्यानंतर पाहता या ठिकाणी काय होतं, सिरीज ओपी बार काढावं लागतं. हे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ओपी बार आर बार काढायचं आहे, तर पी बार मायनस ओ बार आहे. यू कॅन राईट दिस. ओके, मी होमवर्क देतो. फाइंड द वेक्टर मोमेंट, फाइंड द वेक्टर मोमेंट ड्यू टू F bar about O acting at P. ओके, तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है बार इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस k and the point P is given 1 1 1. Second problem, F bar is equals to minus 2j प्लस 3k. इसका मतलब इसमें जीरो नहीं है. द पॉइंट P इज 1 2 माइनस 1. थर्ड प्रॉब्लम, F bar इज इक्वल्स टू I प्लस j प्लस k and the point of application P is given as 1, 2, 0. सी डी नंबर है. F bar is equals to 5i plus 6j minus 7k and the point of application is 3 minus 2 4. ओके, तो आपको ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना है. See, this idea of this problem is the force is acting at a point P, then our aim is to find out the moment about the point O. ये सभी को होमवर्क करना है और वो होमवर्क करके भेजना है. तो ठीक है, कल इसके आधार पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. तो कल के दिन लेक्चर नहीं होंगे, हम परसों वी शैल मीट द डे आफ्टर टुमारो. ओके, नाउ लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू. नमस्कार.